Hello and a very warm welcome to Testbook Super Coaching. I hope all of you are doing really well this evening, this Thursday evening. Without further ado, let's just very quickly get started. Good evening, Devashish, Angan, Kasturi, Neha, Abhilasha, Sonali, Queen Khan, Amya, Devashri, Samiksha, Satendra, Shahbaz, Zamar. Good evening, everybody. Good evening. All right. Good evening. All right. So without further ado, let's just very quickly get started. आज की जो important priority है, we will be looking at literary theory का एक component from another important book which is actually very important. That is Sara Upstone. So Sara Upstone की जो book है literary theory, उसके अंदर से हम लोग कुछ components को cover करेंगे to understand that how you can understand, prepare better for your complete topic of literary theory. Now, when we're talking about literary theory, there are a couple of pointers that we need to keep in mind. सबसे पहला हमें theorists के नाम पता होने चाहिए कौन कौन सी theories को लेके आ रहे हैं कौन कौन से books आ रहे हैं कौन से seminal texts उन्होंने लिखे हैं उनके जो terms हैं उनका क्या मतलब है जैसे Helen Sixu is associated with écriture feminine that is women's only writing जैसे कल की क्लास में हम लोगों ने डेरिडा को आर्ची इक्रिप्टियर से देखा था आर्ची राइटिंग से देखा था व्हिच टॉक्स अबाउट स्पीच एंड राइटिंग तो ये सारी चीजें अगर आप ऑर्गेनाइज वे में प्रिपेयर करते हैं यू विल बी एबल टू सी बेटर आउटकम्स कमिंग तो इसीलिए आपने एक चीज ध्यान रखनी है दैट व्हेनेवर यू प्रिपेयरिंग फॉर लिटरेरी थ्योरी अ फुल प्रूफ स्ट्रेटजी ऑलवेज हेल्प्स राइट एक जो प्रॉपर स्ट्रेटजी होती है दैट विल ऑलवेज बी हेल्पिंग यू ऑल टुगेदर ठीक है तो ये आपने ध्यान रखना है गुड इवनिंग विशाल गुड इवनिंग पीडीएफ मैंने फर्स्ट क्लास का इंग्लिश लिटरेचर हसलर्स पे भी डाल दिया था इसका मैं एडमिन एक्सेस ले लूंगी नीरजा मैम टेक्स्ट बुक का सो दैट आई कैन आल्सो शेयर इट ओवर हियर चलिए विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स जस्ट वेरी क्विकली गेट स्टार्टेड जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को सबसे पहले आप लोग कुछ आइस ब्रेकर क्वेश्चंस हैं ठीक है वी आर हैविंग अ फ्यू आइस ब्रेकर क्वेश्चंस आप लोगों को क्लासरूम्स के बारे में तो पता ही है वी आर हैविंग आवर 8 o'clock क्लासेस गोइंग ऑन रेगुलरली क्लासरूम स्टूडेंट्स के साथ वो चल रहा है मंडे टू सैटरडे एट 8 पीएम संडे को 11 एम कॉन्सेप्ट सेशंस हो रहे हैं जहाँ पे रिगरसली हम हर एक कॉन्सेप्ट को कवर कर रहे हैं जैसे टुडे वी स्टार्टेड अमेरिकन लिटरेचर कल हम लोगों ने इंडियन ड्रामा को देखा था from covering all the important dramatic works to of course practicing questions और 9:30 p.m. पे हम questions को practice करते हैं of course 10:30 p.m. we are meeting on YouTube Monday to Friday और अब weekends पे आपकी marathon classes भी start हो जाएंगे जिसमें you'll be able to actually study properly ठीक है चलिए without further ado let's just very quickly get started जल्दी से start कर देते हैं इस particular topic को तो आज एक बुक जो काफी इंपॉर्टेंट बुक है दैट इज कॉल्ड सारा अपस्टोन ठीक है सारा अपस्टोन की जो बुक है ये काफी इजी वे में आपको टॉपिक्स को इंट्रोड्यूस करवाती है और एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जैसे हम कहते हैं ना विलियम जे लॉन्ग आप एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लिटरेरी इंग्लिश लिटरेचर के लिए रख सकते हैं सिमिलरली लिटरेरी थ्योरी को पढ़ने के लिए ये सारा अपस्टोन इज वेरी हेल्पफुल मैंने इसका पीडीएफ इंग्लिश लिटरेचर हसलर पे डाला हुआ है आप उसको वहां से डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं इन केस इफ यू कैन नॉट बाय द बुक और यू डोंट वांट टू बाय द बुक यूट्यूब सेशंस जैसे कि मैंने आपको बताया है वी कंडक्ट दीज यूट्यूब सेशंस एट 10:30 पीएम 10:30 पीएम पे वी आर मीटिंग ऑन अ रेगुलर बेसिस विद ऑल ऑफ यू एंड ऑफ कोर्स आई टोल्ड यू अबाउट दिस टेलीग्राम प्लेटफॉर्म एज वेल मुझे इसके एडमिन राइट्स लेने हैं ताकि मैं आपका पोल्स और क्विज स्टार्ट कर सकूं एंड दैट आई विल गेट इट डन ठीक है पूजा 8 o'clock वाली क्लास और 9:30 पीएम की क्लास ये दोनों के दोनों आपके टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर होता है तो अगर आप कोर्स में जाएंगे यू विल बी एबल टू सी इट अदरवाइज आप कॉल भी कर सकते हैं तो ये जो नंबर आपको यहाँ पर दिख रहा था आई थिंक मे बी आगे वाली स्लाइड्स में आई शो यू द नंबर इज वेल तो उस नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं इन केस ऑफ यू फाइंडिंग इश्यूज इन केस ऑफ यू फाइंडिंग प्रॉब्लम्स आपको कोई सेशन का लिंक नहीं मिल रहा है तो आप इन शॉर्ट कर सकते हैं दैट यू आर एक्चुअली रीचिंग आउट टू पीपल दे विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट ठीक है चलो without further ado let's just very quickly get started पहले जल्दी से हम कुछ आइस ब्रेकर क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं एंड इन आइस ब्रेकर क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद we will be heading into our topic for today ठीक है तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं let's see how many of you get the right answer good evening शिल्पा good evening मोनिका good evening everybody चलिए जल्दी से बताइए यहाँ पर क्या सही जवाब है what is the right answer arrange the following forms in order of which they are appearing ये जिस order
ऑर्डर में अपीयर कर रहे हैं आपने बताना है। कॉमेडिया डिलार्ट को और क्या नाम दिया जाता है? कॉमेडिया डिलार्ट को इटालियन कॉमेडी भी बोला जाता है, ठीक है? आई एम वेटिंग फॉर द आंसर, आई एम वेटिंग फॉर द आंसर राइट नाउ, आई एम वेटिंग फॉर द आंसर फॉर ऑल ऑफ यू। राइट, सो कॉमेडिया डिलार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमेडिया डिलार्ट को हम लोग, वी आर आल्सो कॉलिंग इट कॉमेडिया डिलार्ट को हम लोग इटालियन कॉमेडी भी बोलते हैं। दैट्स अनदर नेम व्हिच इज गिवन टू इट, दैट इज इटालियन कॉमेडी। तो अगर आपको बताना है कि किस ऑर्डर में ये आए हैं, किस ऑर्डर में ये आए हैं, सो हाउ वुड यू बी एबल टू टॉक अबाउट दैट ऑर्डर? ओके, देवशीष इज आंसर्ड, रवि पांडे इज आंसर्ड, अभिलाषा इज आंसर्ड। अभी तक सही आंसर नहीं आया है, अभी तक सही आंसर नहीं आया है। वी हैव नॉट गॉट द राइट आंसर अप अंटिल नाउ, ठीक है? देखिए, कॉमेडिया डिलार्ट जो इटालियन कॉमेडी है, ये जो है दिस वाज एक्चुअली परफॉर्म्ड वे बैक इन 16th सेंचुरी। ये 16th सेंचुरी में परफॉर्मेंस इनकी होती थी। दिस वाज एज ओल्ड एज 16th सेंचुरी। तो ये पहला आना चाहिए ना, देन टेक्निकली बिकॉज कन्फेशनल पोएट्री, एजिटप्रॉप, पिकरिस नॉवल, ये सब लेट आ रहा है। दैट इज व्हाट यू आर एबल टू सी, राइट? पिकरिस नॉवल जो है, that is also something that you are able to largely see, right? Because novel भी आपका आ रहा है, आपका emerge हो रहा है, but you are able to see that commedia dell'arte comes before, क्योंकि 16th century में ही start हो चुका है। performances हो रहे हैं, you are able to see performances, जैसे आपका mask लगा के performances होते हैं, that's the same way commedia dell'arte is actually coming in, ठीक है? So please remember that पिकरिस novel का लगभग same time है। पिकरिस नॉवल कहाँ पे ओरिजिनेट हुई थी? पिकरिस नॉवल स्पेन में ओरिजिनेट हुई थी। इट ओरिजिनेटेड इन स्पेन एंड वी वर एबल टू सी के पिकरिस नॉवल का ऑलमोस्ट टाइम आप कह सकते हैं कोइंसाइड करता है। तो ये स्टार्ट कहाँ पे हुआ था? इट स्टार्टेड वे बैक इन स्पेन में। आप देख पा रहे थे दैट अ लॉट ऑफ दीस पिकरिस वर्क्स वर एक्चुअली रिटन। थॉमस नैश ऑफ कोर्स, व्हेन वी आर लुकिंग एट 1594 में थॉमस नैश लेके आ रहे हैं द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर और द लाइफ ऑफ जैक विल्टन। The Unfortunate Traveler or the Life of Jack Wilton, वो इंग्लिश की फर्स्ट पिकरिस्ट नॉवल कही जाती है एंड वो कब आ रही है? वो 1594 में आ रही है। आई थिंक हम लोगों ने कल परसों यूट्यूब की क्लास में किया था। जैक, सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट नैश, नैश का जो फर्स्ट इंग्लिश में पिकरिस्ट वर्क आ रहा है दैट इज कमिंग इन 1594। तो आप देख पा रहे हो, पहले कॉमेडिया डिलार्ट आ रहा है, फिर आपका पिकरिस्ट नॉवल आ रहा है, बिकॉज कॉमेडिया डिलार्ट आपका थोड़ा सा पहले आ रहा है। एजिटप्रॉप जो है, एजुकेशन प्रोपेगेंडा, ये कब आया था? ये आपका सितंबर 1920 में आया था। व्हेन वाज दिस इंट्रोड्यूस्ड? दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन सितंबर 1920। ये आपका कब स्टार्ट हुआ था? दिस वाज स्टार्टेड इन सितंबर 1920 में आपका स्टार्ट हुआ था, दैट यू वर एबल टू सी। इट वाज हाईली politicized, it was highly politicized theater, agitation, propaganda, दोनों को आप क्लब अप कर रहे थे। And when you're looking at confessional poetry, that was way of course this poetry starting in 1950s and 60s। तो ये इसका टाइम कोऑर्डिनेट है 1950s and 60s, 50s and 60s। So आप क्या यहाँ पर देख पा रहे हो? You are able to see that Commedia dell'arte is coming first, followed by picarist novels, right? Followed by your picarist novels that are coming, because 1533 में picarist novel आ रहा है, followed by your agitation propaganda that is coming in September 1920, and ultimately you have confessional poetry that is coming in 1950s and 60s। आप properly इनके structured notes बना सकते हैं। Please be very careful। ये scoring pointers हैं, इनमें आपने गलत नहीं जाना है। ज्यादातर सब लोग 3 से स्टार्ट कर रहे थे, दैट वाज नॉट करेक्ट, राइट? मोस्ट ऑफ यू वर स्टार्टिंग फ्रॉम 3, दैट वाज नॉट द करेक्ट अप्रोच। डोंट गो रॉन्ग विद दिस, ओके? अरेंज द फॉलोइंग बुक्स इन द ऑर्डर इन व्हिच दे अपीयर्ड। ये किस ऑर्डर में आए थे उसमें आपने बताना है। यू नीड टू टेल अस, ओके? चलिए जल्दी बताइए। गुड इवनिंग ज्योति, गुड इवनिंग लिची, सो गुड टू सी यू। ओके, व्हाट इज द राइट आंसर ओवर हियर? What is like the right answer to be here? I think Pooja, Aziz, Lichi, they're all like old friends reuniting together. Is it on the platform? Okay. चलिए जल्दी से बताइए. I hope all of you, clear the exams that you're sitting for, or revise literature properly, and then you're sitting in the same university as heads, or driving the functions. That should be the case. Okay. What is the correct answer here? What is the correct answer here? अगर आपको इसको ऑर्डर में जिसमें आए हैं उसमें बताना है, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? अभी आई एम वेटिंग, एक भी आंसर नहीं आया है, एक भी आंसर नहीं आया अभी तक।
The dictionary, history of Rasselas, vanity of human wishes, lives of poets. Jaldi bataiye, what is the right answer? Okay, no, no, no. Very good. I think Amai ka almost close here. Amai has reached very closely. She has identified the first one correctly. ठीक है? अब ये आपको कैसे आ रहा है? Vanity of human wishes is the 10th satire of juvenile imitated. ठीक है? Vanity of human wishes अभी हम लोगों ने क्वेश्चन भी किया था क्लासरूम क्लास में 9:30 PM में कि Alexander Pope was inspired by his satires from which classical poet? Horace. Horace से वो inspired थे. Horatian satires and Juvenalian satires. Horatian satires थोड़े mid level के comical satires होते हैं and satire is aiming at amendment of vices. Whereas when we're talking about juvenile satires, they're much more acerbic, they're much more harsher that you're able to see. तो ये चीज आपको थोड़ी ध्यान में रखनी है यहाँ पर. So please remember this that the vanity of human wishes imitating the 10th satire of juvenile. ये भी question आपका आ चुका है. When was it coming? It was coming in 1749. ठीक है? तो आप थोड़ा सा ये आपको याद रखना है. This is what I was telling classroom students also. जैसे यू नो डॉक्टर्स होते हैं तो डॉक्टर्स के पास एक इतनी मोटी सी किताब होती है वो हर टाइम उसको रखते हैं आपके लिए वो ऑक्सफोर्ड कंपेनियन इज दैट मोटी सी किताब ठीक है दैट इज योर गो टू बुक फॉर बिकमिंग अ प्रोफेसर उसको आप हाईलाइट कीजिए उसका फ्लिप ऑन यू नो कार्ड्स बनाइए उसके बट फ्लैश कार्ड्स बनाइए जस्ट मेक श्योर यू यूजिंग इट ठीक है देन 15th अप्रैल ये भी आपको याद होना चाहिए 15th अप्रैल 1775 में आपका 1755 में आपका क्या आ रही है डिक्शनरी आ रही है which is taking time to be produced altogether. So dictionary is coming in over here, and Samuel Johnson, Dr. Samuel Johnson इसको कब publish कर रहे हैं? When is dictionary getting published? 1755 में ये publish हो रही है. So 1755 is the year when it is getting published और कब आ रही है? 15th अप्रैल को आ रही है. कब ये आ रही है? 15th अप्रैल को this particular work is actually coming in. Now history of Rasselas जो है, which is telling you it was getting published almost 4 years after dictionary. So 1759 में ये वर्क आ रहा है 1759 में and lives of English poets which is the first example of biographical criticism. जो biographical criticism है that is what we are able to see. When is it coming? It's telling you the story of 52 poets. It's the last one that comes in 1779 to 81. ठीक है कब से कब तक है 1779 to 81. That is your lives of English poets. So ये सारी books जो आप देख पा रहे हो all of these are works written by Dr. Samuel Johnson. ठीक है Dictionary of English Language, History of Rasselas, Vanity of Human Wishes, Lives of English Poets. ये सब आपको एक chronological order में याद रखना है. Now this is match the following. ये आपके पास match the following आया है. Okay, Shabna, you can actually invest in Oxford Companion. ये आपको under 500 rupees Amazon पे मिल जाएगी. But otherwise you can easily download it. ये Google पे भी available है. So if you just type Oxford Companion Google के ऊपर आपको Google Books में भी मिल जाएगा. You can actually download this as well. Okay, a very interesting question. What is the right answer? I'm waiting for the right answer over here. Let's see how many of you are able to get the right answer. Catherine Susanna Pritchard. Catherine Susanna Pritchard, Australian author हैं and the co-founder of the Communist Party of Australia. The Communist Party of Australia है उसके co-founder हैं. So what is the work that has been written by Catherine Susan Pritchard? Pritchard is writing Conardo. Conardo. ठीक है ये एक हिंट आपको मैं दे रही हूँ सो प्रिचर्ड ने कौन सा वर्क लिखा है प्रिचर्ड का वर्क है कोनाडो ना कोनाडो जो है द वेल इन द शैडो कोनाडो का सबटाइटल क्या है द वेल इन द शैडो 1929 और ये वर्क जो है ये आपको बता रहा है द ब्यूटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया द सेटलर्स ऑल टुगेदर ये एबोरिजिनल वुमेन के बारे में बता रहा है you know about the life overall that you're able to see so Catherine Susanna Pritchard is the writer writing Conardo का सबटाइटल भी प्लीज लिख लीजिए द वेल इन द शैडो द वेल इन द शैडो द वेल इन द शैडो कोलिन जॉनसन का कौन सा वर्क है विच इज द वर्क दैट कोलिन जॉनसन इज रिटन कोलिन जॉनसन का pseudonym क्या है मुडुरु मुडुरु is the pseudonym that we are able to see Wildcat Falling 1965 Wildcat Falling 1965 is one that Colin Johnson has written Colin Johnson ने Wildcat Falling लिखा है so you need to keep that in mind altogether Sally Morgan come on everybody should know that right Sally Morgan her autobiography My Place is the autobiography written by Sally Morgan, and Jack Davies is the writer writing Burungin, right? Jack Davies is the one who's actually writing. He's a playwright altogether. Burungin was there. His play. This is a play. Burungin is a play that he's written. तो ये सारे आप जो अपनी notes बना रहे हैं, जैसे for instance आपने अभी भी classroom class में we were talking about crab, right? Chris Wallace cat.
Crab, he is an Australian writer. तो जो आप तभी मैं आपको कहती हूँ एक बेस्ट वे ऑफ एक्चुअली मेकिंग नोट्स इज फ्लैश कार्ड्स, क्योंकि आप फ्लैश कार्ड्स को कभी भी अपडेट कर सकते हो, यू कैन कीप देम हैंडी। उसको बस एक सिरदर्दी है कि आप ऑर्गेनाइज वे में कैसे रखोगे, दैट्स द ओनली प्रॉब्लम। एंड इफ यू आर गुड एट दैट, आई थिंक फ्लैश कार्ड्स इज द बेस्ट सोल्यूशन। ये प्लीज ऐड ऑल ऑफ दीज नेम, कैथरीन सूसन प्रिचर्ड, कोलिन जॉनसन, सैली मॉर्गन, जैक डेविस, please add them in your notes that are related to Australian writings, ठीक है? जो आपके Australian writings के notes हैं उनमें please ये add कर लीजिए। How does John Stuart Mill define happiness? John Stuart Mill happiness को कैसे define करते हैं? He is defining happiness, right? John Stuart Mill अपनी book Utilitarianism 1863 के अंदर स्टूडेंट्स अभी हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, रिमेंबर चोकम चाइल्ड के ऊपर हार्ड टाइम्स, एंड वी सेड दैट हार्ड टाइम्स इज अ क्रिटिक ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म। यूटिलिटेरियनिज्म बाय जॉन स्टुअर्ट मिल इज कमिंग इन 1863। तो बताइए यहाँ पर व्हाट इज द करेक्ट आंसर? What is the correct answer? It is a philosophical defense of utilitarianism. और ये बताते हैं the greatest happiness principle, right? The greatest happiness principle book 2 के अंदर he talks about it. ओके और उसमें बहुत ही ब्यूटीफुल लाइंस भी आती हैं, which are always quoted. It's better to be a human dissatisfied than a pig satisfied, right? It is better to be a human dissatisfied than a pig satisfied, better to be Socrates dissatisfied than a fool satisfied. ये बहुत ही फेमस लाइंस थी, ये भी लाइंस आपकी पूछी जा सकती हैं, ठीक है? ये भी लाइन आपकी पूछी जा सकती है, यू कैन मेक अ नोट ऑफ इट। चलिए जल्दी से बताइए व्हाट इज द राइट आंसर? नो, डी इज नॉट द राइट आंसर, डी इज नॉट द राइट आंसर। Okay, Supratim, you have given very good. Ravi Pandey has given the right answer. Good. Pleasure and the absence of pain, right? What is happiness? Pleasure and the absence of pain. Pleasure and the absence of pain. That is the right one. और ये please आप लिख भी दीजिए. Happiness is the presence of pleasure and the absence of pain. It's the presence of pleasure and absence of pain. तो happiness क्या है? जब आप pain को emotion, pain as an emotion को नहीं experience कर रहे हो। And he also says it is better to be a human dissatisfied than a pig satisfied. It's better to be Socrates dissatisfied than a fool satisfied. So please remember that total sum happiness. Utilitarianism is a sum total of happiness. जॉन स्टुअर्ट मिल ने सब्जेक्शन ऑफ वुमेन भी लिखा है, जिसमें वो कहता है कि अगर आप आधे से ज्यादा पॉपुलेशन को अवॉइड कर दोगे, ही सेज दैट द सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। आपका इट्स जस्ट नॉट मेन एंड वुमेन, ठीक है? ऑफ कोर्स आपका मेन है एंड ऑफ कोर्स आपका वुमेन है, बट द सोसाइटी इज आल्सो डिवाइडेड इनटू इंटेलिजेंट एंड नॉन इंटेलिजेंट पीपल। तो बाय depriving women of not coming to the workforce, you are depriving intelligent women also to give their services, and you're making sure that unintelligent men are working for us. So subjection of women is also a very important text. चलिए quickly just match the following करिए. Just tell us, this is very easy. This is very easy. I think over here everybody should get the right answer. जल्दी बताइए what is the right answer over here. Okay, what is the right answer over here? चलिए जल्दी बताइए what is the right answer. Come on, everybody, 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 quickly, quickly, quickly. Country Wife, Restoration Comedy, written in 1675. कौन लिख रहा है कंट्री वाइफ? वाइट चिलीज के पेन से आ रहा है, राइट? 1675। आपको एक तो डेट्स भी पता होनी चाहिए, बिकॉज ये आपका सेट देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी आती हैं, राइट? कंट्री वाइफ इज कमिंग फ्रॉम द पेन ऑफ वाइट चिली। वाइट चिली इज टेलिंग यू, इट्स टेलिंग यू अबाउट एंटी प्यूरिटन आइडियोलॉजी। अभी सैमुअल बटलर का क्यूडी ग्रास में हम लोगों ने क्लासरूम क्लास में क्विज में करा था, राइट? और as it is, you're able to see this was a problem child of literature. Double dealer कौन लिख रहा है? Very good, very good. William Congreve. Double dealer is William Congreve. So Congreve is the writer who's associated with the double dealer that is coming in, right? Man of the Mood or Sir Coplin Flutter? Etheridge. Man of the Mood कौन लिख रहा है? Who's writing Man of the Mood or Sir Coplin Flutter? This is a restoration play telling you the story of Dorimant. Dorimant की story बता रहा है, right? That is the story which is being told over here. So Etheridge is writing Man of the Mood. Etheridge is writing Man of the Mood. And John Vanbrugh क्या लिख रहे हैं? John Vanbrugh is the writer of Provoked Wife, right? Provoked Wife is coming from 1697. John Vanbrugh is the writer associated with the Provoked Wife. ये सारे restoration comedies को आप please अच्छे से
से लिख दीजिए क्लासरूम स्टूडेंट्स आपको प्रॉपरली नोट्स बना लीजिए बिकॉज अभी भी वी वर practicing this question in the 9:30 p.m. lecture. You should not go wrong with these questions at all. Fine. Okay, again you have to match the following. You have to match the writers with the works. और ये सारे काफी इजी हैं if you use the elimination method. जैसे आपको पता है Anil's Ghost is used by is coming from Michael Ondaatje's pen. तो आप पहले ही कर दीजिए राइट आप पहले ही कर दीजिए या भारती मुखर्जी राइटिंग जा सकते हो आप पहले ही what you have to do is you just make sure that you are trying to mark the ones that you know. So Uma Parmeshwaran, she's a short story writer. She's a retired professor, of English at the University of Winnipeg. Pretty inspirational overall. And what are you able to see? What is the work that she's written? She's written this work called Trishanku. Trishanku is coming from Uma Parmeshwaran. Okay. Make a note of this. Very good, very good, very good. So Uma Parmeshwaran जो है, she is writing, she writes on post-colonial literature altogether. इन्होंने Cycle of the Moon लिखा था. Uma Parmeshwaran has written a Cycle of the Moon and the shampoo के लिए she is actually associated. Bharti Mukherjee, what is she writing? What is Bharti Mukherjee writing? Her novel Jasmine, 1989. Bharti Mukherjee is writing the novel Jasmine. So novel Jasmine जो है 1989 वाली that is coming from the pen of Bharti Mukherjee. So please remember that. Cyril Dabadine क्या लिख रहा है? What is Cyril Dabadine writing? Cyril Dabadine is a writer who's written Drums of My Flesh. Drums of My Flesh. Again, Dabadine is also an important writer. All of these आप अपने post-colonial works में डाल सकते हैं. You can put them over there. And this is Cyril Dabadine is a writer who's born in Guyana. So when we're looking at the Caribbean works, when we're looking at works from your post-colonial writings, that of course becomes important. ठीक है तो इसको थोड़ा सा अपने ध्यान रखना है. Okay, Dryden's dramatization of Paradise Lost is entitled. Dryden का जो dramatization है Paradise Lost का उसको क्या बोला जाता है? So Dryden was a great admirer of Milton. ठीक है, that is what you were able to see, and we are able to see that he was dramatizing Paradise Lost. ठीक है, so what are we able to see? What are we able to see? कौन सा है? कौन सा है? Which is the correct answer? Here you either know the answer or you don't know the answer. What is the correct answer, everybody? What is the correct answer over here? तो भाई अभी मॉक नेक्स्ट हम लोग प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट वीक तो उसमें आपको ऑप्शंस ही ऑप्शंस मिलेंगे. Very good, very good. B is the right answer. Absolutely right. The state of innocence is absolutely the correct answer over here. तो ड्राइडन ने पैराडाइज लॉस्ट का जो था वो पूरा का पूरा ड्रामेटाइजेशन किया था और ये कब आया था? This had come in 1677, written in 1674 और आया था 1677 में publish होके. ठीक है? So please remember this. Okay, very interesting question. Two pioneering feminist tracts, Kate Millet's Sexual Politics and Germaine Greer's The Female Eunuch, were published in which year? ये दोनों important works हैं. ये कौन से year में आ रहे हैं? In which year are you able to see that they are coming? In which year are you able to see them coming? They're very important works of second wave of feminism. ठीक है? और यही आप देख पा रहे हो. Both of them are very important. Female eunuch as well as when we are looking at sexual politics. When are they coming? When are they coming? No, 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 no. When is it coming? When is it coming? 1970. ठीक है? When is it? Very good. C किसने दिया? अजीज ने दिया. Very good. 1970 is the right answer. ये question आता है second wave feminism वैसे भी आप कर लीजिएगा. Who defined poetry as the best words in the best order? The best words in the best order. ठीक है और ये प्लीज याद रखिएगा ऐसे जो टेबल टॉक्स था ठीक है ऐसे जो टेबल टॉक्स था उसमें आता है उसमें you are able to see so who's the writer who actually gives this the best words in the best order. The best words in the best order. The best words in the best order. Who said these lines? The best words in the best order. कौन बोल रहा है? The best words in the best order. The best words in the best order. चलिए जल्दी बताइए what is the right answer over here? Coleridge is the right answer. Aziz is on fire. Aziz is on fire. Coleridge is absolutely the right answer. Coleridge is absolutely the right answer over here. Okay. Who among the following poets defined free verse as playing tennis without a net? Free verse is playing tennis without a net. आप free verse use कर रहे हैं open form of poetry which doesn't have a rhyme or a meter. So you are able to see that it is literally playing tennis, but there is no net. So how do you come to know where is the ball? Which team are you a part of? So who's the person who actually says that? Who's the person who actually says that?
Yes, who's the person who actually says that? This is Robert Frost, ठीक है? Robert Frost actually says that, all right? Robert Frost. बाकी लोगों ने भी बोला है, but ये Robert Frost ने बोला है, ठीक है? Please remember that. Christopher Marlowe wrote all the following plays except there is one play that he has not written. Which is the play that he has not written? Which is the play that he has not written? जल्दी बताइए. Which is the play that he has not written? He has not written a play. Which is the play that he has not written? Everybody, quickly, quickly. And then we quickly get into the agenda for today. Christopher Marlowe wrote all of the following plays except एक play मार्लो ने नहीं लिखा है. कौन सा play नहीं लिखा है मार्लो ने? Richard the Three. Okay, very good. Amya का सही जवाब आ गया है. Subhashish, Gunjan, Vishal, everybody has given the right answer. Richard the Three. Richard Edward the Second is by him. Joe Malta, Tamlin the Great, they're all by him only. Okay, moving on to one of the last questions for today, and then we'll proceed. And इसको आप in detail कर लीजिएगा. Rolabad, the French philosopher linguist, is very important. According to Barth, the text which draws attention to its artifice, to the ways in which it is structured is called. To the ways in which it's structured is called what? To the ways in which it's structured is called what? So, according to Barth, a text which draws attention to its artifice, to the ways in which it is structured is called what? What is it called? To the ways in which it's structured, what is it called? What do we call it? What do we call it? We call it a writerly text. We call it a writerly text. ये यहीं से ही हम लोग कंटिन्यू करेंगे questions में. Rather, I want you, this is your homework as well. I want you to read a little more on Barth. I want you to read a little more on Germaine Greer. I want you to read a little more on Kate Millett. I want you to read a little more on all the other things like Uma Parmeshwaran, for instance. तो ये सबको आप अच्छी तरह से जो Australian writers we've talked about, please read a little more. Okay, now coming on से जब आप books like Sara Upstone को consult करते हैं, there are one or two things which are very helpful. ठीक है, देखो जैसे topics like modernism, अगर आपको modernism cover करना है, so Sara Upstone ने बहुत beautifully आपका symbolism पहले explain किया हुआ है, aestheticism explain किया गया है, art for art से एक movement, modernism अच्छे से explain किया गया है. So modernism, surrealism आपको किसी भी literary theory book में properly explain नहीं मिलता है. जबकि ये 20th century isms आपके लिए important है because ये आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. ठीक है, these are actually asked in your exam, so you obviously have to cover them end to end as well. So whenever we are looking at these kind of works, whenever we are looking at all of these works, you have to keep in mind a couple of things. ठीक है, one second to plug in the battery. 1 minute. Laptop is running out of battery. 1 minute. 1 second. Sorry, I hope I find a plug. I usually charge it, but 1 minute. Okay, done. So let's quickly move on. So when we are talking about Sara Upstone, what are we able to see? That Sara Upstone is a work wherein all of these concepts are also beautifully explained. You get better visibility about these topics as well. Okay. Now, whenever we are talking about modernism, surrealism, Vorticism, Dadaism, ये सारे isms आपके लिए बहुत important हो जाते हैं. It is important
you to know about these isms. It is important for you to have proper coverage altogether. I'll walk you through a couple of pointers so that you get better clarity as to how this book actually offers. So, जैसे for instance, ये पहले start करते हैं by telling you एक जो common myth है about modernism and postmodernism is कि 20th century से start होता है. That's not the reality. ठीक है? When we are talking about modernism, what are we able to see? Oscar Wilde भी बताते हैं nothing is so dangerous as being too modern. So word modern was always used. Modo was always there. Modo stood for something that was new that you were able to see. Okay. Now look at these lines. For the novel written in England and modernism was never so much in opposition to realism as in fact instantiating a new realism with detailed psychological description replacing external social observation. ये क्यों इतना important definition है of modernism because modernism is not a movement away from realism. Modernism rather psychological realism को encourage करता है. So what is modernism encouraging? Modernism is encouraging a certain degree of psychological realism. तो ये आपको याद रखना है यहाँ पर that modernism is not something which is a definitive category overall. So please remember these pointers overall. ठीक है? अच्छा अब मॉडर्निज्म में एक चीज क्या आ जाती है आपका इंटीरियर मोनोलॉग आ रहा है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक आ रही है एंड वी आर एबल टू सी देयर इज अ फ्लूइड नोशन ऑफ टाइम व्हाट डू वी मीन बाय फ्लूइड नोशन ऑफ टाइम फ्लूइड नोशन ऑफ टाइम का क्या मतलब है व्हाट डू वी मीन बाय फ्लूइड नोशन ऑफ टाइम एक टाइम का जो नोशन है दैट इज फ्लूइड हेनरी बर्गसन ये क्वेश्चंस आपके नेट में आते भी हैं डायरेक्टली एंड वी आर ट्राइंग टू रिवाइज दैट विद यू सो हेनरी बर्गसन कम्स इन what are you able to see what does he tell you he tries to tell you that time is not linear time is not genesis to doomsday time is much more refined जैसे मिसेस डैलोवे में टेक्निकली अगर देखा जाए तो लीनियर टाइम तो सिर्फ एक दिन का है बट वी आर एबल टू सी वी आर गोइंग बैक वी आर स्पेशली इट्स जस्ट वन डे बट वी आर गोइंग बैक एंड फोर्थ we are able to see Septimus Smith, the war weary soldier. We are able to see Clarissa Dalloway. We are able to see her life. We are able to see what all happens with her. तो ये भी चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है यस सुप्रतिम एब्सोल्युटली राइट बच्चे बिल्कुल सही कि ये जो आपकी फ्लूइड आइडेंटिटी है दैट्स व्हाट हेनरी बर्गसन सेड कि फ्लूइड नोशन ऑफ टाइम हो गया है इट इज नॉट अ लीनियर नोशन ऑफ टाइम ओके एंड प्लीज रिमेंबर मॉडर्निज्म सरियलिज्म डाडाइज्म एवंटगार्ड मूवमेंट्स ये जो आपके सारे एवंटगार्ड मूवमेंट थे सर का मतलब होता है बियॉन्ड रियलिज्म वॉटिसिज्म all of these were actually movements associated with modernism. All of these were movements that were associated with your modern tendency. अब एक पीरियड हाई मॉडर्निज्म का क्या आता है जो बहुत ही ज्यादा आपका 1920s में देखा जाता है डिफरेंट काइंड ऑफ एवंटगार्ड राइटिंग आ जाती है थिंकर्स जो हैं वो डिफरेंट चीजें लिख रहे होते हैं दैट इज वेयर वी आर एबल टू सी दैट दिस पीरियड ऑफ हाई मॉडर्निज्म कम्स इन इंटेंस मॉडर्निज्म इंटेंस एक्सपेरिमेंटेशन फ्रैगमेंटेशन ठीक है फ्रैगमेंटेड रियलिटी दिखा रहे हैं फ्रैगमेंटेशन हो रही है एवंटगार्ड लिटरेचर आ रहा है दैट इज व्हाट यू आर एबल टू सी सो मॉडर्निज्म जो है इन पोएट्री फॉर इंस्टेंस पोएट्री के अंदर अगर यूज हो रहा है तो व्हाट आर यू एबल टू सी यू आर एबल टू सी फ्री वर्ड्स यू आर एबल टू सी वर्ड्स लिब्रे right you're able to say verse libre so again abhi abhi hum logon ne yahi kara hai free verse according to Robert Frost is nothing but it's like a playing tennis without a net over there it is not having any rules it's not having any regulation so yes Happy Sharma wo jo experimentation hai that is giving you a lot of flexibility that is giving you a lot of flexibility aap koi tight rigid compartments mein divided nahi hai theek hai no verse is free for the man who wants to do a good job राइट नो वर्स इज फ्री ऐसा नहीं है कि फ्री वर्स है तो आप कुछ भी लिखेंगे आप अगर अच्छा आर्ट प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो आप अच्छी तरह से प्रिपेयर करेंगे यू विल ट्राई टू मेक श्योर दैट यू गिव इट योर बेस्ट शॉट ऑल टुगेदर दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू टॉक अबाउट ओके सो यही चीज आ जाती है दिस इज व्हाट यू आर एबल टू सी इमेजिज्म एज अ मूवमेंट राइट इमेजिज्म as a movement also becomes important imagism में क्या देख पा रहे हैं they want to condense everything so imagism surrealism vorticism dadaism futurism ये आपके सारे isms collectively एक जगह पे mostly I have never seen any literary storybook it is presented but Sara Upstone के अंदर
आपको ये मूवमेंट्स होते हैं, आपको सिंबलिज्म का एक चैप्टर है, एस्थेटिसिज्म का एक चैप्टर है, तो आप समझ पाते हो कि प्रोग्रेशन क्या हो रही है। आपको लिटरेरी थ्योरी एक्चुअली में समझ में आती है, देन यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द थ्योरी इन अ बेटर मैनर ओवरऑल। तो एजरा पाउंड जो है, हाउ ही इज गेटिंग इंस्पायर्ड, यू आर एबल टू सी दैट इन अ स्टेशन ऑफ द मेट्रो 1913, इंस्पायर्ड फ्रॉम हाइकू फॉर्म ऑफ पोएट्री व्हिच ट्राइज टू कंडेंस एवरीथिंग, और हाइकू और इमेजिज्म इज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम सिंबलिज्म, जो अगेन कंडेंस कर देना चाहता है. So you are able to see that there is a lot of experimentation, there is a lot of power of new type or new ways of representing that is suddenly shown यहाँ पर. urban आपके metaphors use हो रहे हैं, colloquial language use हो रही है, psychological realism important हो रहा है. That is what you are able to see. अच्छा, and please remember, when we are looking at art movements developing, हम क्या देख पाते हैं, vorticism also, by the way. So just like you have imagism, we are also able to see vortex movement that comes in, right? अभी vortex movement क्या है? Let me just see if you are able to see. Yeah, you are able to see. Now what is this vortex movement? Just like a vortex, आप नीचे खींचे जा रहे हैं. This is also an avant-garde movement. ठीक है? This is also an avant-garde movement. Okay? No, विशाल, ये सारा अपस्टोन की बुक है, और मैंने ये बुक का पीडीएफ इंग्लिश लिटरेचर हसलर्स टेलीग्राम चैनल पे दिया भी हुआ है. आप उसको वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या आप उसको गूगल पे भी एक बार सर्च कर सकते हैं. तो आप यहाँ पे क्या देख पाते हो, व्हाट आर द व्हाट इज सेइंग, व्हाट इज एक तो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं. इनकी मैगजीन क्या है, ब्लास्ट. आपने क्या करना है, अपने एक टेबल बना लेना है, जो मॉडर्न मूवमेंट्स है, कल की क्लास से पहले आप बना लीजिएगा ये टेबल, जो आपके इंपॉर्टेंट मॉडर्न मूवमेंट्स हैं, और इनको कौन पीपल एसोसिएटेड है, इनका कौन सी आपकी स्ट्रक्चर्ड मैगजीन है, ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है? सो मैगजीन वॉटिसिज्म की क्या है, ब्लास्ट है. ब्लास्ट इज द मैगजीन दैट वी आर एबल टू सी. और ऐसे ही आप देख पाते हो फ्यूचरिज्म. फ्यूचरिज्म का कौन मैनिफेस्टो देता है, मैरिनीटी. मैरिनीटी इज गिविंग यू द मैनिफेस्टो. सो ये सारे के सारे वॉटिसिज्म, which is trying to tell you about the modern life. देखो, modern life had become extremely fragmented, chaotic. It was very different reality. People का climate change for the very first time people were able to see as a result of 200 years of capitalism. तो ये सारी changes you are able to look at, ठीक है? And ये सारे poets like T.S. Eliot or Hilda Little, or even for that matter, when you see these epical works, these are modern epics trying to tell you about sense of chaos, trying to tell you that it's difficult to survive overall. ये आप चीज देख पाते हो. अच्छा, ये भी प्लीज याद रखिएगा कि आपका जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है, ये दो तरह का होता है. वन इज फ्री इनडायरेक्ट, राइट, एंड द अदर इज फ्री डायरेक्ट. ठीक है? एक है फ्री इनडायरेक्ट और दूसरा है फ्री डायरेक्ट. इसका मतलब क्या है, व्हाट इज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस आपका इंटीरियर मोनोलॉग है. एक बार आप इसको भी ऐसे देख लीजिए, फिर नेक्स्ट पे. अच्छा, एक और चीज क्या है, सारा अपसोन की ब्यूटी क्या है, जैसे आपको एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दिया, अब उस कॉन्सेप्ट को पैराफ्रेज भी कर देंगी. देखिए, जैसे ये अगर आपको नहीं समझ में आया कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इज डिवाइडेड इनटू फ्री इनडायरेक्ट और फ्री डायरेक्ट, तो ये एक्सप्लेन किया गया है. व्हाट इज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, इंटीरियर मोनोलॉग. आप अंदर ही कुछ ना कुछ सोची जा रहे हैं. जैसे फिजिकली आप इस क्लास में हैं, 11:09 पे आप इस टाइम पे इधर हैं, इस पर्टिकुलर क्लास में हैं, बट मेंटली आप हो सकता है कि कहीं और चले गए. मेंटली आप सोच रहे हैं भाई, अब ऑस्ट्रेलिया आ गई है वर्ल्ड कप में, क्या इंडिया जीत पाएगी कि नहीं जीत पाएगी, या आप सोच रहे हैं कि मेरा नेट एग्जाम कैसा जाएगा, या आप सोच रहे हैं कि मैं दिसंबर के बाद कहीं छुट्टी पे चली जाऊं या चले जाऊं, राइट? तो आप कुछ और सोच रहे होते हैं. दैट इज व्हाट यू आर एबल टू सी. सो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है जहां पर आपका एसोसिएशन बन रहा है, आप दिमाग में कहीं और घूमे जा रहे हैं. प्री डायरेक्ट डिस्कोर्स क्या है, उसको इंटीरियर मोनोलॉग कहा जाता है. इंटीरियर मोनोलॉग है क्या, आप खुद से बातें कर रहे हैं. एंड फ्री इनडायरेक्ट क्या है, दिस इज व्हेन यू आर एबल टू सी के नरेटर आपके थॉट्स बता रहा है. सो फ्री इनडायरेक्ट क्या है, मेरे जो थॉट्स हैं मैं नहीं आपको बता रही हूँ. फ्री डायरेक्ट क्या है, फ्री डायरेक्ट स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस दो तरह की है, फ्री डायरेक्ट एंड फ्री इनडायरेक्ट. फ्री डायरेक्ट क्या है, इंटीरियर मोनोलॉग, मैं जो सोच रही हूँ मैं आपको वो बता रही हूँ. लेकिन जो मैं सोच रही हूँ, जो नैरेटर है वो बताता है, दैट इज फ्री इनडायरेक्ट. आई होप इट इज क्लियर. अगर नहीं क्लियर है तो आप एक बार मुझे बता देना.
ठीक है? तो प्लीज इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ऑल्सो क्या देख पाते हो, जैसे सरियलिज्म हो गया, बियॉन्ड रियलिज्म हो गया, यू आर एबल टू सी दैट इज ऑल्सो मॉडर्निस्ट मूवमेंट। अब ये जो मॉडर्निस्ट मूवमेंट है, इट इज एसोसिएटेड विद आंद्रे ब्रिटॉन, इट्स एसोसिएटेड विद लुई एरागॉन, इट्स एसोसिएटेड विद फिलिप सोपोल्ट। ऑल दीज आर पीपल विद whom surrealism is actually associated। ये सारे के सारे लोग हैं which you are able to see that surrealism is actually associated। एंड यू आर एबल टू सी ये लोग लिटरेचर को शुरू करें। व्हाट इज ऑटोमेटिक राइटिंग? ऑटोमेटिक राइटिंग इज आपके दिमाग में जो आ रहा है आप वो लिख रहे हैं। कोई चीज जो आप एसोसिएट कर, जैसे बॉटल से आप क्या एसोसिएट करते हैं, यू कैन ऑल्सो राइट इट डाउन। तो ऑटोमेटिक राइटिंग, विलियम बटलर येट्स की वाइफ वाज नोन टू बी राइटिंग इन द ऑटोमेटिक राइटिंग वे। Okay, Shabnam. Shabnam has given an analogy as well. Good, good, good. Okay, so that is what you were able to see. And of course, Breton, आप देख पा रहे हो, he was influenced by Dadaism. Dadaism meant nothing, nonsense, right? So that is something that, it is associated with Zara. So again, all of these are modern movements that are coming in. Dada's manifesto, Breton support दे रहे हैं, right? So all of these avant-garde movements, all of these avant-garde writings, ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? At the heart of it, they are trying to bring us more aware. They're trying to tell us a little more. They're trying to make us understand that whenever you are looking at modern art, आप modern art में क्या देख पाते हो? आप diversity देख पाते हो, एक different experimentation देख पाते हो। What I'm trying to say is that if you have to set up your base, so अगर आप जैसे हडसन से स्टार्ट कर रहे हो, या आप विलियम जे लॉन्ग से स्टार्ट कर रहे हो, या एडवर्ड एल्बर्ट से स्टार्ट कर रहे हो ब्रिटिश लिटरेचर के लिए, सारा अपस्टोन इज एक्चुअली हाईली रेकमेंडेड अलोंग विद रमन सेल्डन, अलोंग विद आप कुछ और पढ़ना चाहते हो तो सेट योर फंडामेंटल बेस फॉर लिटरेरी थ्योरी। अभी आपके एग्जाम्स हो जाएंगे तो हर रोज ये सारे, इसके अंदर कम से कम 16 से 18 चैप्टर्स हैं, मैं हर एक चैप्टर को एक बार कवर करवा दूंगी विद मोर डिटेल एंड मोर इनपुट्स, ताकि आप अगर सिर्फ वही वीडियोस भी देख लेंगे दैट विल एक्चुअली बी मोर देन इनफ। फाइन, ओके, ग्रेट। We will continue from here itself tomorrow. So tomorrow I'm going to be meeting you. कल जो आपका क्लास का टॉपिक है, let me just tell you that also. Of course, we'll practice more questions क्योंकि मैंने देखी आपको questions practice करने में ज्यादा मजा आ रहा है और आप रिवाइज कर पा रहे हो, so I don't have any problem। जैसे नेक्स्ट वीक पूरा आपका मैराथन क्लासेस अबाउट प्रैक्टिस ही चलेंगी। कल का जो टॉपिक है, आई विल ओके एनीवे आई प्रॉब्ली टेल यू ऑल बिकॉज हियर आई एम नॉट एबल टू सी द टॉपिक एनीवे। तो कल का जो टॉपिक है वो भी हम लोग अच्छी तरह से वी विल बी डिस्कसिंग इट प्रॉपरली। मेक श्योर दैट ऑल ऑफ यू आर रिवाइजिंग अभी तक हम लोगों ने जो भी किया है। मे बी आई थिंक आई फाउंड इट, एक बार आई सी इफ आई एम एबल टू फाइंड इट। सेकंड। Yeah. So कल, अच्छा, कल is a very interesting topic. कल we'll cover book or award winning works, ठीक है? And of course I'll give you more practice questions. I think let's just practice 20 to 30 questions straight away because you are able to revise much better, ठीक है? All right. Thanks so much, everyone. Good night, everyone. Sweet dreams. Take good care of yourselves. Okay. And अगर आपको कोई भी और doubt है, कोई भी और problem है, so you please let me know. Okay. All right. Thank you so much. Any book that you're referring is actually a good book, provided you do it with the dedication, you complete it properly. All right. Thank you everyone for joining. I'll catch up with all of you tomorrow at 10:30 p.m. Take care. God bless. Bye. Bye everyone. Thank you.